Good morning, class. Fourth, let's start the simple grammar chapter 11, and that is noun or number. Noun के numbers, that is noun कितने हैं ये हमें पता है. The form of words which refers whether a person, animal, place or thing is one or more than one is called number. एक और एक से ज़्यादा बताने वाले हमें कौन होते हैं? नंबर्स. नंबर्स हमें शो करते हैं कि नाउन जो है वो एक है या एक से ज़्यादा है, दैट इज़ कॉल्ड नंबर. सो हाउ कैन वी नो दैट द जो नाउन है वो सिंगल है या बहुत सारे हैं? सो व्हेन वी शो द सिंगुलर नाउन दैट मीन्स वन एंड प्लूरल नाउन दिस दैट मीन्स मोर देन वन. सिंगुलर है मतलब वो एक है और प्लूरल है दैट मीन्स वो एक से ज़्यादा है. So that is the difference between singular and plural. There are two kind of numbers here, singular and plural. So singular number, the form of noun word expresses the single person, animal, place or thing, that is called singular. A form of noun word that expresses more than one person, animal, place or thing, that is called plural noun. प्लूरल नंबर नाउन. एग्जाम्पल देखो, सिंगुलर का स्टूडेंट, प्लूरल का स्टूडेंट्स, बुक, बुक्स, बॉय, बॉयज, सिटी, सिटीज, काउ, काउस. सो हाउ टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल? सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे करेंगे? सो इन सम वर्ड्स we just added as to get plural form. Boy, boys, pen, pens, book, books. So in this kind of words we just add as and get the plural. In some noun words ending in s, double s, sh, ch, x, o are made plural in adding es. ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे एस, डबल एस होता है, एस एच होता है, एस सी एच होता है, एक्स होता है और ओ होता है, उनका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो ई एस लगा के बनता है. दैट इज गैस, गैसेस, बीच, बीचेस, बेंच, बेचेस, फॉक्स, फॉक्सेस, लॉस, लॉसेस, बंच, बंचेस, ब्रश, brushes. So these are the noun which changes with the es in the plural form. In a singular noun words end with y, there is a consonant letter before y, then it is plural form changing y as ies. जैसे baby, b-a-b-y, b-a-b-i-e-s हो जाएगा प्लूरल में, b-o-d-y body, b-o-d-i-e-s. if y consonant sound है then it change into ies. So this is the rule of numbers to change singular to plural. You have to read all these nouns to understand that what changes are coming in this type of words. If the singular words ends with y vowel, then it letters before a, e, i, o, u, then the plural is formed by y, s. So अगर vowel के पीछे y है then its changes are only we use as in the plural form. Alloy, alloys, bay, bays, toy, toys, day, days. So these are the changes in singular to plural. For the following 12 nouns, plural are formed by changing f or fe into ves. कुछ फॉर्म्स जो होते हैं वो f से ves में चेंज हो जाते हैं, जैसे calf calf, calves, life life, lives. सो सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म में चेंज होने के लिए ves का यूज़ होता है. नोट, रेस्ट ऑफ द नाउन वर्ड्स लिविंग अबव 12 वर्ड्स एंडिंग f आर मेड प्लूरल बाय एडिंग इन देयर एंड्स एज chief, chiefs, roof, roofs, hoof, hoofs. इन 12 के एक्सेप्शन में बाकी किसी में f होता है तो वो s लगता है, पर इन काफ, हाफ, नाइफ, इनके पीछे ves लगेगा. सो दैट आर द एक्सेप्शंस. सिंगुलर नाउन वर्ड्स एंडिंग विथ o आर मेड प्लूरल बाय एडिंग s. जिनके पीछे o होता है दैट मीन्स डबल o होता है, उनके पीछे s लगाएंगे और प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे. Following words are yet shorter than the form of language and those plural are made by adding as in their as. So हर वर्ड की एक डिफरेंट वे है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का. दैट मीन्स किलो, किलोज, पियानो, पियानोज,
demos. So these are the words which we change singular to plural. Next one is some words are made plural by changing inside a e i o u, just like man, men, man, man singular होगा, men plural होगा, fwt foot, fwt feet, mous mouse, mice mice. So these are the changes we do in the vowels. Some words are made plurally by adding en, जैसे brother, brothers, child, children, ox, oxen. So these are the exceptions. Some words having same form of singular as well as plural, deer, deer, इनके form कभी change नहीं होते हैं, fish, fish, sheep, sheep. So ये singular में भी same रहेंगे और plural में भी same रहेंगे. Carefully remember the plural of following words. हमें इनके भी plural forms याद रखना है. Son in law, sons in law, commander in chief, commanders in chief. So we are just changing the further words. So these are the exception and we have to learn them all. जो singular and plural noun, singular और plural noun का use कैसे करते हैं? A man is sitting here. A man, that is a singular man is here and men are sitting here. So we write man for singular and men for plural. Now exercise 1. Write the singular or plural form of the words in the big space. So man, plural form of man is men. Women, men. So singular is man. Photo, photos. Potato, potato, potatoes. Tomatoes, tomatoes, tomato, tomato. Foot, feet. Hero, heroes. Geese, singular is goose. Mouse, mice. Deer, deer. Kilo, kilos. Roof, roofs. Hoof, hoofs. Knife, knives. Ship, sheep. Fish, fish. So fish, sheep, deer ये singular हो या plural same रहेंगे. State whether the underlined words in each sentence is singular or plural. Write against the each sentence. Sheep are grazing, so it is plural. The mice are running, plural. My left foot got injured, singular. His ear was infected with virus, singular. Ear है ना इसलिए. Dog and cats are pet animals, plural. Next, see the exercise 3. Complete the following sentences by filling the suitable words from the bracket. हमें suitable words भरने हैं. He gave 5 to me rupees. क्योंकि 5 singular तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा है 5. She has many in her house. Dogs, many. He was given a chance. एक chance है इसलिए chance. Do you agree with all of them? He has black and white which are quite expensive. Black and white pants. Black and white उसके पास pants हैं जो expensive है. So this is the exercise done. You have to do this exercise in your book and in your notebook too.